सो हेलो फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं हम आगे हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन में। तो आगे हमने यहाँ तक देख लिया था जो कि हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ था जो कि न्यूटन ने डिराइव किया था, दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो आगे हमें सॉल्व एग्जांपल्स देखने हैं। तो चलिए सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल वन है, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? So, first of all, after seeing this example, we should firstly write down the given and to find statements. तो गिवन और टू फाइंड लिखने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें प्रॉब्लम में दिया क्या गया है और हमें क्या फाइंड करना है, और वो फाइंड करने का हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। सो महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यहाँ पर 1 मीटर जो है वो डिस्टेंस हमें यहाँ पर दिया गया है, यानी हमें आर इज इक्वल्स टू 1 मीटर यहाँ पर दिया गया है। देयर मासेस आर 75 केजी एंड 80 केजी रिस्पेक्टिवली। यानी कि m1 जो कि मास 1 है वो 75 केजी एंड m2 80 केजी। These are all two things which are given, and distance is also 1 meter given in the problem. And g, that is the value which we have to remember, that is g is equals to 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. That is the universal gravitational constant which will be required in calculating the force. हमें पूछा गया है what is the gravitational force between them. So ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया है तो हमारे माइंड में हमें रिकॉल करने हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में देखा है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ वी हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला, दैट इज F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज F इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करती जानी है। जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 75 केजी, that is mass 1, then m2, that is the 80 kg, that is the mass 2, and upon the r square. R square, as we are having the value r is equals to 1 meter, so 1 square, this will be the Newton as it is in the force. We are calculating the force, so the unit will be Newtons. So after doing the all the calculations, we are getting the value of the force as 4.002 into 10 raised to minus 7 Newton. The gravitational force between Mahindra and the Virat is 4.002 into 10 raised to minus 7 Newton. So this is the very small force. If the force of the friction between the Mahindra and the bench on which he is sitting is zero, then he will start moving towards the Virat under the action of this force. We can calculate his acceleration and velocity by using Newton's laws of the motion. So as we have calculated the force here, that is the 4.002 into 10 raised to minus 7, as we can see that it is the 10 raised to minus 7, which is the very small force. So as we all have seen that before, as the force is inversely proportional to the r square. That means if the distance is increasing, the force is decreasing. So from this,
We can conclude that this is the very small force. If the force between friction between the Mahendra and on the bench which he is sitting is zero, then he will start moving towards the Virat under the action of this force. We can calculate his acceleration and velocity by using Newton's laws of the motion. तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ द मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू स्टे इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये हो गया न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ है द एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। सो आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं न्यूटन्स के थ्री लॉज। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल टू। इन द अबो एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस, as we are all knowing, the friction is the force which मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। सपोज हमारे जो शूज और जो सैंडल्स होते हैं वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम मतलब हम जो चलते हैं ग्राउंड के सरफेस पे, तो उसकी वजह से हमारे जो शूज है और ग्राउंड के सरफेस पर एक फोर्स एक्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू विच द frictional force, the shoes and the sandals are get worn out. This is the frictional force. So if the friction force becomes zero, that means the frictionless. तो यहाँ पर एग्जांपल में कहते हैं कि assuming that the bench on which महेंद्र is sitting, महेंद्र जिस बेंच पर बैठा है, अगर उस बेंच का फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अगर जीरो हो जाए, यानी स्टार्टिंग विद द जीरो वेलोसिटी, व्हाट विल बी द महेंद्रस वेलोसिटी ऑफ द मोशन टुवर्ड्स द विराट आफ्टर वन सेकेंड? विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ? तो देखते हैं यहाँ पर फोर्स जो एक्ट हो रहा है महेंद्र के ऊपर, जो हमने कैलकुलेट किया, फोर्स इज इक्वल टू 4.002 इंटू 10⁻⁷ और हमें यहाँ पर महेंद्र का मास भी पता है जो कि हमें यहाँ पर दिया था 75 केजी। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? Every the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied and the change in momentum occurs in the direction of the applied force. तो यहाँ पर एक और इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी, दैट इज द फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, that is the Newton's second law. Also, we have derived the equation F is equals to ma. So we are using that equation, and according to that, we are going to find out the acceleration. Acceleration is equals to force upon mass. F is equals to ma. A is equals to F upon m. As we are having the force and the mass, we are putting the values of the force and the mass in this, and we are getting the acceleration as 5.34 into 10 raised to minus 9 meter per second square. So using the Newton's first equation, we can calculate Mahendra's velocity after the 1 second. Newton's first equation, we are going to find out, हमें पूछा क्या गया है, will this velocity change with time and how? And यहाँ पर हमें पूछा गया था हमें एक्सेलरेशन क्यों फाइंड करना पड़ा? तो हमें एक्सेलरेशन इसलिए फाइंड करना पड़ा क्योंकि न्यूटन्स के जो हमें इक्वेशन से v is equals to u plus at s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as. So all these equations are so we are using the Newton's first equation. As we are going to compare with the time, we are going to calculate what will be the velocity after the 1 second. So we are having the time with us, and for using the Newton's first equation, we should have the acceleration with us, and we are assuming that initial velocity is zero. So we are having the value of u, we are having the value of the a, and we are having the value of the t. So we are going to calculate the final velocity which will be there of the Mahindra after the 1 second, having the acceleration as 5.34 into 10 raised to minus 9 meter per second square. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। एज महेंद्र इज सिटिंग ऑन द बेंच, हिज इनिशियल वेलोसिटी u is equals to 0. Assuming that the bench be frictionless, so v is equals to 0 plus 5.34 multiplied by 10 raised to minus 9 multiplied by 1 meter per second. So we are getting the final velocity as 5.34 into 10 raised to minus 9 meter per second. So the Mahendra's velocity after 1 second will be 5.34 into 10 raised to minus 9 meter per second. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल वेलोसिटी. द वेलोसिटी विल इंक्रीज विथ टाइम बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन. द एक्सेलरेशन विल also not remain constant because as Mahendra move towards Virat, the distance between them will decrease.
causing an increase in the gravitational force, thereby increasing the acceleration as per the Newton's second law of motion. Assuming the acceleration in the example 2 above remains constant, how long will Mahendra take to move 1 centimeter towards the Virat? So this is the task for you. Use your brain power. You can also calculate this with the help of the all the calculations as we have seen above. तो चलिए डू यू नो में क्या कहा गया है वो हम देखते हैं. So we are going to see you must be knowing about the high and low tides that occur regularly in the sea. जैसा कि हम देखते हैं कि जो लो टाइड्स अँड हाय टाइड्स जिसे हम भरती ज्याला आपण भरती आणि ओहोटी असेही म्हणतो. तर ज्याला आपण भरती आणि ओहोटी म्हणतो तर ते का होत असतील, कशामुळे होत असतील, तर ते पण आपल्याला या चैप्टर मध्ये बघायचं है. तो डू यू नो जो डू यू नो में हमें जो बताया गया है तो वो इसी के बारे में. So let's see. You must be knowing about the high and low tides that occur regularly in the sea. The level of the seawater at any given location along seashore increases and decreases twice a day at regular intervals. High and low tides occur at different times at different places. The level of the water in the sea changes because of the gravitational force exerted by the moon. तो यहाँ पर जो बताया गया है दैट मीन्स द ऑकरेंस ऑफ द हाई एंड द लो टाइड्स आर ड्यू बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून. यानी मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ऊपर जो वाटर है तो उसके ऊपर एक्ट होने की वजह से वो हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स हमें दिखाई देते हैं. वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द मून. यानी वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द मून एंड द लेवल ऑफ द वाटर देयर गोज अप कॉजिंग हाई टाइड एट दैट प्लेस. तो जो वाटर है वो मून की ओर खींचा जाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एक्ट ऑन द water on the surface of the earth, due to which the water get pulled towards the moon, which increases the level of the water that goes up, causing the high tide at that place. At two places on the earth, at 90 degree from the place of the high tide, the level of the water is minimum and low tides occur there as shown in the figure 1.6. यानी अगर मून यहाँ पर है, मून जहाँ हम इस इमेज में 1.6 में देख सकते हैं कि मून जहाँ पर है तो वहां पर हाई टाइड है. यानी मून जो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ के सरफेस के वाटर को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है. तो साधारण सी बात है कि यदि मून वाटर को अपनी ओर खींच रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन यानी अपोजिट साइड है जो अर्थ सरफेस की 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेस ऑफ द हाई टाइड तो वहां पर हमें दिखाई पड़ेगी लो टाइड. सो दिस इज ऑल वी कैन see here the occurrence of the high and the low tides on the surface of the earth due to the gravitational force of moon which is acted on the surface of the water present on the earth. So now let's see uh, earth's gravitational force. Will the velocity of a stone thrown vertically upward remains constant or will it change with time? यानी जो ग्रेविटेशनल जो है विल द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन वर्टिकली थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रिमेन्स कांस्टेंट और विल इट चेंज विद टाइम. यानी अगर हमने एक स्टोन लिया और उसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फेंका तो क्या उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होगी या सेम रहेगी. तो चेंज होगी तो कैसे चेंज होगी. व्हाई डजंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम. स्टोन हमेशा ऊपर ही क्यों नहीं जाता रहेगा. व्हाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट. कुछ हाइट पर पहुंचने के बाद वो सडनली नीचे क्यों गिर जाता है. व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन. वो मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है. These are all the questions of which answers we are going to see in here. The earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force. The center of mass of the earth is situated at its center, so the gravitational force on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth. Because of this force, an object falls vertically downwards on the earth. So, जेव्हा आपण इथं बघतोय की आपण एखादा ऑब्जेक्ट जर वरती फेकला तर तो खाली अर्थच्या सेंटरकडे अट्रॅक्ट होतो. तर हे का होतं. सो वी हॅव सीन बिफोर प्रिव्हियसली वन कन्सेप्ट that is the center of mass of the spherical object it directed towards at its geometrical center. So
as we are taking as the earth as a spherical body, spherical shape, so the center of mass will be at obviously it will be directed towards the center of the earth. So when we are throwing every object towards the upward direction, it get attracted with the help of the gravitational force of the earth towards the center of the earth, and this force acts on an object vertically downwards on the earth. Similarly, when we throw a stone vertically upward, the force tries to pull it down and reduces its velocity. Due to this constant downward pull, velocity becomes zero after a while. The pull continues to be exerted and the stone start moving toward the downward vertically towards the center of the earth under its influence. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ के यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी है वो कम होती जाती है, एंड एट द सर्टेन पॉइंट व्हेन ड्यू टू इट्स कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी बिकम्स द जीरो आफ्टर अ व्हाइल, और कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। यहाँ पर हमें हमारे पास यहाँ पर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हमें यहाँ पर दिए हैं, तो चलिए देखते हैं। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जांपल, यानी महेंद्र के ऊपर अभी ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है तो वो हमें कैलकुलेट करना है अर्थ की वजह से। तो मास ऑफ द अर्थ वी शुड ऑलवेज रिमेंबर मास ऑफ द अर्थ as 6 into 10 raised to 24 kg, and the radius of the earth that is 6.4 into 10 raised to 6 meter. So these are the two values which we have to remember. That is the mass of the earth and radius of the earth. And mass of the Mahendra, as we have given in the earlier example, that is the Mahendra's mass is 75 kg. So gravitational constant, as we have to remember, as I told, बार बार अगर हम देखेंगे और एक दो बार अगर एग्जाम्पल हम खुद से सॉल्व करके देख लेंगे तो हमें आसानी से ये सारी वैल्यू जो है मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इन सारी की वैल्यूज और सब हमें याद रहेगा। So G is equals to 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Using the force law, the gravitational force on the Mahindra due to Earth is given by, तो force जो हमें force is given by 1.83 into 10 raised to 9 times larger than the gravitational force between Mahindra and